Okay. So what do you have understood from this? So, ma'am, it's the very thing which you told before also, that what is a financial statement. Firstly, we need that in the form of like the balance sheet, the income statement, retained earnings, and then comes that why do we need to produce financial statement, that is uh, to keep record of everything. And then there comes the purpose, that is internal purposes are there and external purposes there. So for externals, like for example, who are investing in the company, they need to see that what is the condition of the financial position of the company that is going, and they need to see to it. And then for the internals, they will see and then they will try to improve their economic, whatever their condition is. Correct. Very good. So financial statement basically is what? It is a written recording document है जिसमें आपको पता चल रहा है कि मेरे business में what all activities has happened, right? And then it is like a standard reports which will give you any analysis or give you something which would talk about something like what has happened in balance sheet or income statement or statement of cash flow or statement of retained earnings, what all happened over there, right? Okay, and then from there you will be able to take a decision. For example, from balance sheet you can see that what is the growth in the capital, whether capital got increased or capital got decreased, whether outstanding expenses or the liability is still there or not, or has it been increased or decreased, or in the past what has happened, and then you can do the forecasting also from that. इनकम स्टेटमेंट से आप देख सकते हो कि आपके क्या एक्सपेंडिचर रहे हैं, क्या आपकी इनकम रही है. यू कैन आल्सो डू द एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, सेइंग दैट कि भाई 3 साल में इतना था, 2 साल में इतना हुआ, 5 साल में इतना है, राइट? वेदर वी आर ग्रोइंग और नॉट, वेदर वी आर डिक्रीजिंग, इन व्हाट स्टेट वी आर, करेक्ट. और उसके बाद आ जाते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, जहां पर हम ये बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो पैसा बचा है प्रॉफिट देने के बाद, मतलब प्रॉफिट में से जो बचा है आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, टैक्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो पैसा बचा है उसको हम रिटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा हम वापस बिजनेस में लगा रहे हैं या उनको एज अ डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, ठीक है. तो क्या मेरा पे आउट रेशियो रहेगा, क्या मेरा रिटेन अर्निंग्स है, व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट and from last 5 years what is the trend, है ना, that we can also check from the retain earning statement. ओके, इक्विटी में कितना चेंज आया, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखते हैं. अब हमें इस चीजों की मतलब हमें क्या, क्योंकि हम सिंपली जब अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, देन व्हाई डू आई नीड टू प्रोड्यूस अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सोच के बताओ. बढ़िया. मैम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रायल बैलेंस देख के ही बनाएंगे, तो विदाउट दैट हाउ विल बी मेड? नहीं नहीं नहीं, हम जो ये सब बना रहे हैं, स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग्स, ये सब भी तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. या हम कुछ रिपोर्ट्स बना रहे हैं, इन सब चीजों की क्या जरूरत है हमें? हम बुक्स में रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शंस की, देन व्हाई डू आई नीड ऑल दिस? डिसीजन लेना पड़ता है ना. ओके. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ओके. फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए. डिविडेंड डिसीजन मतलब like well, the question is why do we need a financial statement while preparing trading account? बताओ.
Hmm. Just think about it, because हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, मतलब फाइनल अकाउंट बनाया है, तो अब सोच के देखो कि हम इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, फिर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्यों? If you want to Google, if you want to search out something, you can do that. I'll give you another 5 minutes, 7 minutes, but come with a technical answer. Okay, Okay. think about it, search it out, take even 10 minutes, I would not mind, but I want you to come up with an answer which will help you to write in the exam also, and also deal with your professional job. Once you will, get into professional services, of course you will do wonders. So think from that perspective. Ma'am, trading account is everything is done in the trading account because we need to know that what is the gross profit or gross loss of the year, and everything is like the financial statements are prepared, and financial management जो होता है सब कुछ होता है because
we need to see to the financial position of the country, of the organization, and the cash flow of the organization, the fund flow of the organization, and that the resources are being used properly, like the proper optimum utilization of resources, allocation of resources. um, so Yeah, that is something that you get it from the written answers and all. But then from if you decide from a company perspective, then what is your say? And even if you are maintaining this, if we are creating these documents, your mindset or your thinking should be, you should think through that what is the use, and how you're going to use it when you're making decisions from a finance perspective. Think from that perspective. I'll give you the technicalities even after this once clear with that. But then first you think from a company perspective. okay. अच्छा फिर I'll tell you see, uh, as I mentioned कि हम लोगों ने यहाँ पर वो सब अकाउंट्स ऑलरेडी बनाए हैं, बैलेंस शीट और सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट और ये सब मैंने तैयार किया हुआ है, राइट? बट नाउ when you talk about the financial statement, you do the analysis as in आपके जो ये जो आपकी बैलेंस शीट्स बनी हुई हैं, ये जो इनकम स्टेटमेंट्स बनी हुई है, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट है, उसमें यू विल सी ना व्हाट ऑल डिविडेंड हैज बीन पेड, हाउ मच इज बीन रिटेन्ड इन द कंपनी फ्रॉम द प्रॉफिट। लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में से आपने अपने सारे एक्सपेंसेस मीट किए, सारा इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, उसके बाद बचा हुआ पैसा आप शेयर होल्डर्स में बांटोगे, करेक्ट Yes. है ना? तो जब शेयर होल्डर्स में अपना पैसा बांटोगे, शेयर होल्डर्स भी तो का जो प्रॉफिट है उसमें उनका भी तो से रहेगा, से एज इन फॉर एग्जाम्पल यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख इन अ कंपनी, ठीक है, उस पे आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो दैट इज 10%, करेक्ट? ठीक है। Yes, ma'am. अब Yes. what company has decided to not to give that dividend, rather to retain back in the company or to reinvest back in the company. Now will you allow that, or will your shareholder be interested in continuing that? Yes, if proper that 6% or proper dividend is given later, then they can invest it, or they might take it back if not given proper profit later on.
Okay, one moment. Acha, so your question is if it is, they if it is circulated or repaid properly, then it is okay. But what if you are okay to, reinvest in the company? Like for example, if you're getting 1 lakh over 10 lakh, which is 10%, right? And company don't want to give that to you, rather they want to reinvest in the company, and you will get output on that 10% also. But what if you are getting 30% return from market? So I'll be taking out my dividend from there and Correct, correct, investing it there. correct, correct. So what companies, I mean, company has decided not to pay dividend, but you are a shareholder, you will do the comparative analysis of the market as well as the profit part, which is coming to you as a dividend, or which should be coming to you as a dividend in case if they are, reinvesting back. Then all the shareholders will analyze whether this company is making a right decision about our dividends or not. In case they are earning better than company and reinvesting that profit back into company, my shareholders will be happy to go with the decision. Otherwise, they will not. But for that also, you need to have these statements and the analysis ready in order to come to this type of decision. Got it? Correct. Yes, ma'am. Although we are preparing balance sheet, we are preparing the trading, we are preparing the trial balances, still we need these statements. Because at the time of decision, you will not go one by one entry. Rather, you will see what is the total summary, what is the output, what is the analysis, and how my company is doing. Correct? Ji, ma'am. So that is, these all things that we need to see from the financial statements. And of course, it is very important from both perspective, as you mentioned earlier, that from internal side also and from external side, like your all stakeholder, uh, your prospective investors, your customers, your employees, and your finance team also. So for example, मैं अगर देख रही हूँ अपनी कंपनी का एनालिसिस, तो मुझे तो ये स्टेटमेंट्स चाहिए, बिकॉज मैं हर बार इतना बड़ा बड़ा वो डिटेल्स नहीं चेक कर सकती. रादर आई वुड लाइक टू गो विद द standard reports in order to see what is the trend, what is the output, what is the total profit, whether my decisions are correct or not, and then in future what could be the forecasting. ठीक है? Got Ji. it? Yes, ma'am. Okay, now you read these one by one. Although I have explained all this, ये छोटे छोटे analysis ही है इसका. आपका ये income statement, what do you include in that? Although you are aware of it, but I want you to just read it out once. Okay? Okay, Faria? Ji, ma'am. ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ पे ओपन कर रही हूँ. आप इसको फटाफट से एक बार रीड कर लो, पांचों स्टेटमेंट्स को. उसके बाद फिर हम इसको समराइज करते हैं. Okay.
Pare, you're reading, right? Yes, ma'am, I'm reading. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, ma'am. Done, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am.
जी मैम। ओके, ठीक है। अब ऑनेस्टली बताने समझ में आए? जी मैम। ठीक है, Like इसमें half of it to you have explained only, the हाँ same thing हाँ, more or less. करेक्ट 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 है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट आई जस्ट वांटेड टू बी अवेयर, यू बी अवेयर ऑफ दीज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एंड देयर कंटेंट्स ऑफ इट। करेक्ट। Yes. अच्छा, अब एक जैसे रेशियो एनालिसिस रहता है, रेशियो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, वी कंपेयर दी रेशियोज, वी कंपेयर दी रेशियोज एज इन हमारे पास जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो, ये सारे ना टाइप ऑफ रेशियोज रहते हैं जिसमें एक फिगर को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है एंड एनालाइज किया जाता है कि क्या स्टेटस है, क्या कंपनी का परफॉर्मेंस है। ये मैं आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही, आई थिंक जब थोड़ा सा एक दो बच्चों को और बोल देना, because this is a long topic and we'll be able to cover this in the next class. ठीक है, Okay. रेस्ट ऑफ द एनालिसिस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, पहले ही मैंने आपको आज टेक्निकल करा दिया सारा। ठीक है, तो विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास एंड और ट्राई टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स टू बी देयर इन द नेक्स्ट। Ma'am, I literally called everybody today. Nobody picks up or nobody's like, I don't know. Apurva was the one who wanted a financial class. ओके, ठीक है। अच्छा, व्हेन डू यू वांट नेक्स्ट क्लास टू बी शेड्यूल? Ma'am, I don't have any problem according to your schedule. अच्छा, ठीक है, कल देखते हैं फिर, है ना? Okay, ma'am. ठीक है, ओके, थैंक यू, Take care, ma'am. Bye. बाय।